In my town, things changed a lot as time went by. It used to be small and quiet, but now it's busier than more buildings and new ways of talking to each other. This happened because more business and factories opened up, bringing jobs and people. Technology also changed how we communicate, but with all these changes, there were some problems like too much traffic and issues with the environment. Even though things are different now, we still celebrate our local festivals and traditions. The town is not as close knit, but we try to keep a balance, the new and old. What is one problem that came with the changes in your time? When we changed, there were a lot of problems that cropped up. One was the pollution. One was that there were basic problems with the environment. Then why did it change? Why did you change your town change over time? Your town changed over time because of technological advancement and change in eras. And what still stays the same in your town's culture? Even we are not close knit. What stays same is the cultural festivals that keep a balance between the past and the present. So in this chapter, we will explore the changes that have occurred in our locality over time. By collecting information from the elders in the community, what can we do? We can gain valuable insights into our lifestyles, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, क्रॉप्स ग्रोन, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पास्ट. तो अगर हम अपने बड़ों से बात करते हैं, हमें पता चलता है, हमें इनसाइट्स मिलते हैं. किसके बारे में मिलते हैं? कि उनका लाइफस्टाइल क्या था, पहले क्या था और अब का क्या है. एंड वी कैन कंपेयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, क्रॉप्स के बारे में और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में. हम और क्या जानते हैं, हमें पता चलता है कि क्या चेंजेस हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं लोकेलिटी पे, एंड व्हाट इज चेंज एंड दैट इज प्रिवेल्ड ओवर टाइम. सो विद दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. Changes in society with time. To understand the changes in locality, we need to collect information from the elders. और ये पॉसिबल ही नहीं. अब आप चेंजेस को कैसे कैलिब्रेट करोगे ना, जब तक आप किसी के पास कोई डेटा ही नहीं होगा. अब डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा जब आप अपने बुजुर्गों से वो बात करोगे जिन्होंने ये चेंज शिफ्ट देखा है, जिन्होंने ये चेंज देखा है, एक एरा से दूसरा एरा देखा है. तो आप उनसे बात करोगे, वो डेटा कलेक्ट करोगे और उनसे इन्फॉर्मेशन लोगे जो उन्होंने विटनेस किया लाइव. बाय टॉकिंग टू देम we can gather valuable information to the lifestyle, transportation modes, crops grown, goods and services and cultural practice of past. तो इनसे हमें सारी जानकारी मिलेगी कि लाइफस्टाइल कैसा था, क्या ट्रांसपोर्टेशन मेथड था, क्या कल्चर फॉलो होता था, क्या क्रॉप्स थे, क्या गुड्स एंड सर्विसेज थी, क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, सब पता चलेगा. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल, हमें पता चलेगा कि कैसे लोग रहते थे, उनका डेली रूटीन क्या होता था, क्या ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे, सोशली एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर सकते थे. हम और भी बात कर सकते हैं उनसे, और बात कर से पता चल सकते हैं कि अब चेंजेस क्या है, कि हाउसिंग में क्या चेंजेस है. जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा कि लोग पहले ट्रेडिशनल हाउसेस में रहते थे और उसके बाद वो चेंजेस हुए मॉडर्न हाउसेस में. तो वी कैन टॉक अबाउट द क्लोथिंग, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ दे यूज्ड टू वेयर, द फूड हैबिट्स, and understand how technology has influenced our way of life. Then we can also understand the transportation modes which has actually changed, right? So we can discover the modes of transportation that were prevalent earlier. So in past we used to have bullock carts, we used to have bicycle, we used to have traditional boats. By comparing them to the transportation modes used today, such as cars, buses and trains, we can appreciate the advancement in technology and infrastructure. Then is the crops grown. We can explore the types of crops that were traditionally grown in a locality and compare them to the crops grown today. तो हम लोग क्या करेंगे, हम कैलिब्रेट कर सकते हैं कि पहले ये वाले क्रॉप्स लगते थे, अब ये लगते हैं. इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर में जो भी प्रैक्टिसेस में चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में चेंज आए या मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से जो भी चेंज आए, वो उससे कितना प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट हुआ ये हमें समझ आएगा, राइट. देन इज गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज पहले अवेलेबल था और अब क्या है, तो कंट्रास्ट करके हम एक एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पर, अर्बनाइजेशन पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर कैसे फ़र्क पड़ा इकोनॉमी पर, राइट. देन इफ़ वी टॉक अबाउट कल्चरल प्रैक्टिसेस, हम पुराने कस्टम, ट्रेडिशन, फेस्टिवल और रिचुअल को जान के हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम उससे कंपेयर करेंगे कि क्या आज हम उसको प्रिजर्व करके चल रहे हैं, क्या हम उतने रिचुअल्स को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. सो वी गेन इनसाइट्स इनटू द प्रिजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंजेस. अब ये चेंजेस आए क्यों सोसाइटी में, लेट्स अंडरस्टैंड दैट.
Changes in society are the result of various factors that have shaped a locality over time. By studying these causes, we can gain a better understanding of why these communities are transformed. Let us understand this. First is your technological advancement. Technological innovations have had a profound impact on a locality. The introduction of new machines, appliances and communication tools has transformed the way we live. अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कैसे चेंजेस आए, जो नई मशीनरी आई ना, जो अप्लाइंसेस आए, कम्युनिकेशन टूल्स आए, उसमें बेटर हो गया. पहले आपका फ़ोन एक ग्रीन और रेड बटन होता था, अब आपका फ़ोन में यू कैन एक्सेस एनीथिंग थ्रू योर फोन. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी ग्रोइंग, राइट. सो दिस एक्चुअली हेल्प कनेक्ट अ लॉट ऑफ लाइफ and definitely impact the economy as well. For example, the advent of automobile has revolutionized transportation, making it faster and convenient. So the availability of smartphones and the internet has enhanced communication and access to information. So all these technological advancement, they have influenced agriculture, they have enhanced the machinery and the modern farming techniques. So finally what has increased, क्या बढ़ा, productivity बढ़ी. अब productivity बढ़ी तो lifestyle कैसी होगी, ज़्यादा बढ़िया होगी ना, ईजी होगी और एफिशिएंट होगी. पहले आपके पास टूल्स इतने नहीं थे, अब इतनी सारी मशीन है. अब आपको क्या करना होता है, आपको एसी चलाना, आपने टक किया, रिमोट दबाया और एसी हो गया. पहले आप हाथ वाला पंखा झेलते, आप दादी से कुछ दादी आपकी परदादी बताएंगे कि वी डिड नॉट हैव दीज फैसिलिटीज, है ना, वी वर यूजिंग द हैंड फैंस. सो दिस इज अ डिफरेंस. बट सो इन केस दिस डिफरेंस केम, सो हाउ डिड इट इम्पैक्ट अस, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, राइट. अर्बनाइजेशन. अब अर्बनाइजेशन क्या हो गया, पहले रूरल एरियाज होते थे, अब रूरल एरिया सिटीज़ में कन्वर्ट हुई. जो ग्रोथ हुई सिटीज़ और टाउन्स की, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉज है जो हमारी लोकेलिटी में चेंज आया, राइट. जैसे ही पीपल रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स में आए, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ा. अब अर्बनाइजेशन बढ़ने से क्या हुआ, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड शॉपिंग सेंटर्स, और एंड दे ऑल अकोमोडेटेड द ग्रोइंग पॉपुलेशन. नाउ अर्बनाइजेशन, तो लोकेलिटी में क्या चेंज आया, लोकेलिटी में क्या हुआ, सिटीज और टाउन बढ़े. बट अगर हम बात करें इकोनॉमी में क्या चेंज आया, इकोनॉमी में क्या चेंज आया, बिजनेसेस बढ़े, नई इंडस्ट्रीज आई जो नीड्स को फुलफिल करी थी अर्बन ड्वेलर्स की. अर्बनाइजेशन के से ये भी फायदा हुआ कि एक्सेस बढ़ा एजुकेशन को, हेल्थ केयर बढ़ा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, और इन लाइफस्टाइल और एस्पिरेशंस और कम्युनिटी की लाइफस्टाइल जिस तरीके से वो रह रहे थे और उनकी एस्पिरेशन की ड्रीम्स भी बढ़ी, राइट. Currently, more than half of the world's population live in urban areas by 2050, which is not very far off. About 70% of the population is expected to live in urban areas, and over 60% of the land projected to become urban by 2030 is yet to be built. Now let's understand ये urbanization पे फ़र्क पड़ा. Globalization क्या होता है, globalization ने बहुत important role play किया, because globalization होता है interconnectedness of the entire globe. So the globe, everybody became connected because of these many changes that had happened over the past. So process of globalization, it played a crucial role in shaping our locality. Globalization refers to the increased interconnectedness and exchange of ideas and goods and services on a global scale. It has brought cultural influences, new markets, access to a wider range of products and services. So availability of international cuisines, fashion trends, entertainment from around the world has enriched our local culture. आज आपको पता है लजानिया क्या होता है, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हर टाइम बढ़ रहा है ना. आप अगर आप इफ़ यू टॉक और इफ़ आई टॉक ऑफ 20 years back, talk to your grandpa and then still talk about lasagna. She was not aware what lasagna was. But now because of globalization, you know the Italian menu, you know the Mexican menu, you know every menu because you are interconnected, right? So globalization ने फ़ायदा क्या किया, इसने नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खोले, नए बिजनेस कनेक्ट हुए, नई मार्केट जुड़ी एक साथ, और इसमें चेंज आया ट्रेड, कंज्यूमर प्रेफरेंस और एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में, जिससे लोकल इकोनॉमी भी बढ़ी, राइट. डेमोग्राफिक्स में भी चेंज आया. डेमोग्राफिक्स में कैसे चेंज आया, पॉपुलेशन साइज कम हुई, बढ़ी यहाँ. तो जब पॉपुलेशन साइज बढ़ी, एज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा और माइग्रेशन पैटर्न में चेंज आया, तो लोकेलिटी में से काफ़ी चेंज आया. As the population grows or declines, it brings about changes in the demand for resources. तो पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी, राइट. इंक्रीज इन एल्डरली पॉपुलेशन में लीड टू ग्रेटर नीड फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी. अगर पॉपुलेशन बढ़ी, अब आपने ये देखा कि पहले इंसान का जो एक
रेट ऑफ मतलब स्पैन होता था, लाइफ स्पैन होता था, वो ज़िंदगी 60 से 70 साल में डेथ हो जाती थी। वो लाइफ स्पैन क्योंकि बेटर फैसिलिटीज़ बढ़ी, तो बेटर फैसिलिटीज़ बढ़ने से क्या हुआ, बेटर फैसिलिटीज़ बढ़ने से क्या हुआ, लाइफ स्पैन आपका बढ़ गया। अब आप जो है 60-70 की एज तक नहीं जिंदा रहते हैं, पीपल सर्वाइव टिल 85, 90, मोर देन 95। तो जब वो चीज़ें बढ़ी तो क्या बढ़ा, आपको ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, ज़्यादा सर्विसेज चाहिए उनको केटर करने के लिए। माइग्रेशन पैटर्न से क्या बढ़ा, माइग्रेशन पैटर्न बढ़ा तो आपको कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ी, लोग नए आइडियाज़, डाइवर्स आइडियाज़ लेके आए, डाइवर्स पर्सपेक्टिव लेके आए। तो अगर हम कंक्लूड करें, जो चेंजेस थे ना लोकेलिटी में, दे आर रिजल्ट ऑफ वेरियस कॉजेज। अब चेंजेस किसकी वजह से आए, हमने पढ़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और चेंजिंग डेमोग्राफिक ने बेसिकली इम्पैक्ट किया सोसाइटी का। ये जो फैक्टर्स थे इन्होंने इन्फ्लुएंस किया हमारी लाइफस्टाइल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी को और कल्चर प्रैक्टिस को। By understanding these causes, we gain a deeper appreciation for the changes that have occurred and the impact on our life. It is important to embrace and adapt to these changes while preserving our unique identity and cultural heritage. अब आता है हमारा, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, चेंज जो आया उसका हमारी लाइफ में चेंज क्या आया। जब भी कोई भी चेंज होगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा या सिर्फ नेगेटिव नहीं होगा, इट विल बी बोथ। सो विल बी स्टार्टिंग दैट इन दिस नाउ. Changes in our locality bring about various consequences that have impact on both different aspects of life. Let's understand that. First is the economic impact. पैसे में क्या impact आया? Changes in the economy have a significant impact on locality. For example, if the new industries or businesses are established, it can lead to increase in employment opportunities. नई industries आई, suppose आपके एरिया में बहुत रेवोल्यूशन हो गया, रैपिड रेल आ गए, आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एग्जाम्पल, राइट। तो आप गवर्नमेंट ने वहाँ पे रैपिड रेल लगा दी, आपका शहर जो है मेन में किसी मेट्रो शहर से ज़्यादा कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, अब मेट्रो वाले जो लोग हैं ऑलरेडी सफोकेटेड है वहाँ रह के, तो वो कहाँ आएंगे, आपके एरिया में आके रहना शुरू कर देंगे। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो दिस मीन्स मोर पीपल हैव द चांस टू फाइंड जॉब्स एंड अर्न इनकम, इम्प्रूविंग their स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. On the other hand, changes in the economy can also result in job losses of the decline of the certain industry. Suppose अब हमने सोचा कि हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लगा ली, अब जो लोग हाथ वाला काम करते थे, हाथ वाला काम करने में इट इज़ अ टाइम टेकिंग जॉब, इट में रिक्वायर लॉट ऑफ स्किल, लॉट ऑफ एफर्ट। अब इंडस्ट्री लगा दी, वही काम कुछ सेकंड्स में हो रहा है जो आप 2 महीने में काम कर रहे हो, तो लॉस भी हुआ। लॉस क्या हुआ, जो हाथ से काम कर रहे थे, they lost their job with the decline in certain industry, which may affect the local economy negatively also, right? So changes in availability of goods and services also impact our daily lives. For instance, the opening of new markets or the introduction of न्यू प्रोडक्ट्स कैन प्रोवाइड अस विद अ वाइडर रेंज ऑफ चॉइसेस। तो अगर बहुत मार्केट खुल गई, हमारे पास बहुत चॉइस है, हम चॉइस करके ले सकते हैं। हाउ इट कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो अगर आपके पास जितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो कंज्यूमर अपना एक कंज्यूमर बिहेवियर होता है जो है ना, वहाँ जाएगा जहाँ पे उसको ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर डिलाइट मिलेगा, तो उसके पास अगर ऐसा होगा तो मार्केट में क्या होगा, कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आके किसका मार्केट बढ़ा, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला मार्केट बढ़ा। बट कौन सा बिजनेस डाउन हुआ, आपकी जो मेन जो मार्केट्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो क्रिप करते हैं कि हमारा मार्केट कम हुआ, हमारे बिजनेस में लॉस आया, राइट। Now let's come to social impact. Social impact changes in society influence the social relationship and cultural practices. For example, with urbanization and globalization, a community becomes more diverse as people from different backgrounds come together. दूसरे लोग आए, हमारे साथ सेटल हुए, हमारी जो पूरी सोसाइटी है बिल्कुल डाइवर्स बन गई। इस कल्चर डाइवर्सिटी से हमारी कम्युनिटी बढ़ी और हमें नए आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव और नए ट्रेडिशन पता चले। इससे और क्या फ़ायदा हुआ हमें, पर इसमें एक चैलेंज क्या, हमें अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है हम इतना ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाते हैं कि हमें अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी याद नहीं रहती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे कल्चर क्या है। सो दैट इज़ अ चैलेंज देयर। सो वी हैव टू take care of that. So changes in social norms and values can also occur, affecting how we interact with one another and how we perceive ourselves within the community. So changes in our behavior can also occur. This is the social impact. Now environmental impact, environment पे impact आएगा, जैसे demographic बढ़ा, population बढ़ी, लोग चीज़ों का ज़्यादा यूसेज स्टार्ट हुआ, तो जब ज़्यादा यूसेज स्टार्ट होगा, डिमांड बढ़ेगी,
तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सपोज अगर हमारे पास अगर हम अपने एंसेस्टर से बात करें, कितने व्हीकल्स यूज़ होते थे, वो कहते थे पहले तो बुलक कार्ट, बाइसिकल ही होती थी, अब हर घर में 2 या 3 कार्स होती हैं। सो उसे पार्क करने के लिए भी हमें स्पेस चाहिए। और अगर हम देखें, अगर वो जितने व्हीकल्स चलेंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री चलेगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन को ही इम्पैक्ट करेगा, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन आवर लोकेलिटी कैन हैव consequences for the environment. For example, urbanization often result in the conversion of natural land into buildings and infrastructure. This can lead to loss of natural habitat and biodiversity. Industrialization, changes in agricultural practices may also contribute to pollution and deforestation, depletion of natural resources. ये जो environmental changes होंगे, इनके far reaching effects होते हैं ecosystem पे, वाइल्ड लाइफ पे, और ओवरऑल हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है. So it is important for us that we need to take care of environment and work towards sustainable practices, minimizing the harm to the सराउंडिंग. तो ये चीज़ तो इंसान को ध्यान में रखते करना है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव कुछ भी फ्री नहीं आता. अगर हम अगर नेचर को उजाड़ेंगे, नेचर इज गोइंग टू come back or hard on us. So we have to take care of environmental sustainability. So in conclusion, changes in a locality bring about various consequences that impact the community. Economic changes affect employment, economic levels and availability of goods and services. Social changes influence our relationship, cultural practice and sense of identity. Environmental changes can lead to habitat loss, pollution, ecosystem disruption. By understanding these consequences, we can proactively respond to the challenges and opportunities brought about by change, striving for a balanced and sustainable development that preserves the community's well-being and environment for future generation. Now, what has changed and what has prevailed? तो क्या change हुआ, क्या prevail हुआ? In our investigation of the changes in our locality, we can identify both aspects that have gone on significant transformation and aspects that have remained relatively constant over time. तो कुछ चीज़ें जो change हुई, कुछ same रही. अब समझते क्या? One of the aspects that may have changed in a locality is the introduction of modern infrastructure. क्या बदला? Infrastructure बढ़ रहा. पहले लोग अगर recreation के लिए पार्क में चले जाते थे, ठीक है, मूवी देखने चले जाते थे, और क्या था, जाता मेले में चले जाता. अब आपको ये सब कम होता है, और आप कहाँ जाते हो? अगर आपको शॉपिंग भी करनी है, आपको थोड़ा चेंज चाहिए, यू बेटर गेट इनटू अ एसी मॉल, you shop, you eat and then you come, you see a movie and then you come back. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आया. दिस इंक्लूड्स, अब रोड में नई रोड्स बनी, नई बिल्डिंग बनी, ब्रिजेस बने, बड़ी फैसिलिटीज आई जिसने हमारा फिजिकल लैंडस्केप चेंज कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, वी मे हैव सीन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाउसिंग complexes, shopping malls, recreational park. These changes in infrastructure have improved the quality of life and provide us with new opportunities and services. ठीक है, तो इससे हमारी लाइफ जो है चेंज हो गई. अब आप सपोज आपको मेरठ से लेके दिल्ली जाना है, द हाईवे इज देयर, सो यू कैन रीच हिट दिल्ली in next 30 to 40 minutes, which is very easy. What made it so easy? You are not struggling to reach to Delhi in a lot of time, because despite the traffic on the roads, you are reaching in time and you are hitting Delhi in 40 minutes because of this infrastructure. Another aspect that may have changed is occupation and lifestyle of people in a locality. तो क्या बढ़ा? Occupations और lifestyle बढ़ गया लोगों का. With advancement in technology and the growth of industries, we have witnessed shift in employment opportunities and types of jobs available. Traditional occupations may have been replaced by professional that require different skills and knowledge. Additionally, changes in lifestyle may include the way we dress, the food we eat, the activities we engage in. For example, the adoption of modern convenience such as smartphones and online shopping has changed the way we communicate and access goods and services. पहले मोबाइल नहीं होते थे, आज अगर हम 5 मिनट के भी मोबाइल के बगैर हैं तो हमें लगता है कि हम लोग कुछ मिसिंग है हमारी लाइफ में. सो ये पहली चीज़ें नहीं होती थी, बड़ी चीज़ें आई, इन्होंने हमारी लाइफ को ईजी कर दिया. So adoption of new technologies is another change aspect in the locality. Technology has rapidly advanced in recent years and we may have witnessed the introduction of various devices, gadgets and digital platforms. These technological advancement have influenced the way we learn, work and connect with others. For example, the use of computers, internet and social media has become more prevalent, enabling us to access information and communicate with the people around the world. So anybody putting up in any corner of the world can be connected because of social media. Now you have a relative putting up at London, it's just at a click away that if you want to wish that person happy birthday, happy anniversary, any special day, so you can just type, text or call and wish. So the word has come together. Now, the prevailing aspects. Despite the changes, there are certain aspects that have prevailed in a locality, providing a sense of continuity and preserving our cultural heritage. One such aspect is cultural tradition.
कुछ चीज़ें जो नहीं बदली, क्या नहीं बदली, हमारा सेंस ऑफ कंटिन्यूटी और हमारा हेरिटेज जो हम अपने ट्रेडिशन से निभाते हैं. सो लोकेलिटी में हैव यूनिक कस्टम, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल जो जनरेशन से जनरेशन एक दूसरे को पास होते हैं. ये जो ट्रेडिशंस हैं ये एक वे है हमें अपनी रूट से कनेक्ट करने के लिए, हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए और फॉस्टर सेंस ऑफ कम्युनिटी कि हम एक पार्ट हैं कम्युनिटी के लिए. कम्युनिटी वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स आर अदर प्रिवेलिंग एस्पेक्ट्स इन अ लोकेलिटी. द बॉन्ड्स बिटवीन फैमिली मेंबर्स, neighbors and friends continue to be important as they contribute to a strong sense of belonging and support within the community. Now the values of compassion, respect, compassion होता है understanding, respect and cooperation often remain unchanged, serving as guiding principles in our interaction with one another. Certain natural features of a locality may have also prevailed over time. These can include geographical landmarks, bodies of water, forests, or specific flora, fauna, आपके plants and animals that have remained relatively unchanged. तो क्या चीज़ unchanged रही? आपकी ये चीज़ें तो change नहीं हुई ना. ये जो natural features हैं contribute to the beauty and uniqueness of our locality. जो natural features हैं ये क्या किस में contribute करते हैं? Uniqueness की locality में and provide a connection to natural world, right? Now, by recognizing and appreciating both the chain and prevailing aspects in a locality, we gain a deeper understanding to our community's evolution and importance of preserving our cultural heritage. It is through this understanding that we work towards a harmonious balance between progress and preservation of tradition and national value. तो हम अपनी लाइफ में आगे भी बढ़े, अपनी सक्सेस की सीढ़ियों को क्लाइम भी करें, पर हम अपनी रूट से भी जुड़े रहें, अपने ट्रेडिशन से भी जुड़े रहें और बहुत अच्छा परफॉर्म करें. इन कंक्लूजन, आवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चेंजेस इन द लोकेलिटी help us identify what has changed and what has prevailed. We observe the introduction of modern infrastructure, changes in occupation and lifestyles, and adoption of new technologies as aspects have changed. On the other hand, cultural traditions, community values, and certain natural features of a locality prevail over time. By recognizing and respecting these changes and prevailing aspects, we can contribute to the sustainable development and preserve our communities' आइडेंटिटी. तो अगर हमने लास्ट स्लाइड में जो देखा कि हमारे पास सब कुछ हमारा जो था सब कुछ चेंज हुआ, पर हमारे अगर क्या चीज़ें चेंज नहीं हुई, हमारी कंटिन्यूटी हम और हमारा कल्चरल हेरिटेज सेम रहा, जिससे हमें लगा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. टेक द करेक्ट आंसर. What is one aspect that can help us understand the changes in lifestyle over time? तो टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आया जिससे पता चला. What is one transportation mode commonly used in the past? Bicycles. How can we analyze the impact of globalization on the local economy by evaluating advancements in technology? What do we gain insights into by comparing the cultural practices of the past and present preservation of cultural heritage? Then what is not a cause of change? Cause of change preservation नहीं है. What is one impact of technological advancement on our locality? इसका एडवांसमेंट क्या हो गया, हमारा एक्सेस बढ़ा हेल्थ केयर और एजुकेशन को. ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड गुड्स ऑन अ ग्लोबल स्केल, राइट. देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑन लोकेलिटी. इकोनॉमिक इम्पैक्ट से कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ी, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट हुआ, देन जॉब लॉस इन सर्टन इंडस्ट्रीज. तो कई चीज़ों में ऑब्वियसली आपका जॉब लॉसेस भी हो, क्योंकि पुरानी इंडस्ट्रीज हटी तो जॉब लॉसेस हुआ. चेंजेस इन सोसाइटी कैन लीड टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डिक्रीज कॉम्पिटिशन, हमारे चैलेंजेस मेंटेनिंग. अगर चेंजेस होंगे तो आपको चैलेंज होगा अपना आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए. Urbanization can lead to preservation of natural habitats, decline in the availability of goods and services, increase pollution and deforestation. Yes, it can lead to increased pollution and deforestation. Let's come to fill in the blank. Dash were prevalent in transportation modes in the past, while dash are commonly used today. So earlier, bullock carts and bicycles were used. Now cars, trains, etc. are used. Now comparing the types of crops grown in the past and present help us to understand the changes in agricultural practices. By collecting information about goods and services in the past, we can analyze the impact of globalization on a local economy. Technological advancements have greatly influenced our lifestyle, making our life easier and more efficient. Urbanization has resulted in the development of infrastructure such as roads, building, schools, hospitals and shopping centers. Globalization has brought cultural influences, new markets and access to a wider range of product and services. Changes in economy can lead to changes in job opportunities and income levels. With urbanization and globalization, our community becomes more as people from different, it becomes more diverse because people from different backgrounds come together.
Dash may have changed in locality due to introduction of modern infrastructure. The lifestyle may have changed in a locality because of introduction of modern infrastructure. Despite the changes, certain aspects like maintaining the cultural heritage and a sense of community have prevailed in a locality, right. Now let's come to true false. Talking to elders help us gather insights into the lifestyle of past. True. Comparing transportation modes allow us to appreciate the advancement technology. True. Changes in agriculture practices have no relation to the shift of. No, it has. Technological advancement had no impact on agriculture. It's not correct. Urbanization also only affects the economy. No, it affects everything. It does not only affect the only effects is wrong, right. Changing demographics have no influence on the demand. No, it has a direct influence on demand and supply. Changes in economy can result in job losses or decline of certain industries. That is true. Cultural diversity has no impact on a community. No, it's false. Community values and relationships are not important in a locality. It matters a lot. Changes in occupation and lifestyles have no influence on a community. No, it has an influence on a locality, right. Now let's come to the brief question answers. The question number 1 is, what information can we gather by talking to our elders about the lifestyle changes? By talking to our elders, we can gather a lot of important information of the lifestyle they had lived in the past and what changes made them come to a different era of living, which includes the food, their clothing, their sense of dressing, the sense of the modes of transportation and the lifestyle they live. How can comparing the types of crops grown in the past and present help us understand the changes in agriculture? By comparing the types of crops grown in agriculture in the past and present help us analyze the food quality, the yield we used to have earlier versus at present, because with the advent of technology and the modern techniques, the rise in the crops and the variety will help us understand and appreciate the changes that technology has brought in. What can the study of goods and services in the past and present reveal about local economy? The study about goods and services can definitely directly impact and reveal and give us the great data analytics of the goods and services available in the past, which changed over in the present because of a lot of technological advancement and change in urbanization, change in the lifestyle of people. So the demands of things started, and the demand had taken a boost. Why? Because of the increasing population. So if we delve into a data wherein we are comparing the goods and services used earlier, we will definitely come to know the changes which have been brought because of the growing population. Name one technological advancement that has influenced our locality. One of the technological advancement that has definitely influenced our locality is the use of social media, computer and internet. How has urbanization affected the infrastructure in a locality? With the movement of people from the rural areas to the modern areas to the cities, urbanization has taken a great shift, right? Urbanization, the infrastructure which has involved, the infrastructure involved is the skyscraper and the industries which has changed the life of people, right? You can also talk of the shopping centers which have come in, which have made a life easier. Then how does urbanization influence a community? Urbanization definitely influences a community because it helps provide all the basic services, or be it recreation, be it the basic services, to make a life more easier. Then is, what are some environmental consequences of changes in a locality? With the growth of population, with the growth of urbanization, it is definitely going to impact the environment, because we need to clear the place, we need to do a lot of deforestation to build our buildings. So this definitely not only affects the nature, it affects us because we generally lead to a lot of pollution, we lead to a lot of industrialization, which is definitely bringing in a lot of pollution and lot of negative impact to the environment. So whenever urbanization happens, now it is taken care that is a harmonious balance is maintained between
man and nature. What are some examples of modern infrastructure that may have been introduced in a locality? Some examples of modern infrastructure can be the shopping complexes, can be the main markets, can be the online and a digital platforms which has made our life easier and more nice. Why are cultural traditions and community values considered prevailing aspects in a locality? So how many changes that happen in a locality? There's one thing that helps in continuing the tradition is the culture and tradition, because when people move from rural areas to urban areas, there is a lot of change that happens. There are new ideas, and the diverse group of people play a lot of role, bringing in a lot of culture which gel together and they stand as one. How do natural features contribute to the uniqueness of a locality? Natural features not only add to the aesthetic value of the environment, it helps us to maintain a balance with the environment. Now answer the questions in detail. Describe the importance of preserving cultural heritage by comparing cultural practices of the past and the present locality. This we have studied. You have to use this paragraph, and if we talk of the cultural practices, or these cultural practices have a great role in changing our life, because these cultural practices, we know about the custom, tradition, festivals and rituals that were integral part of community in the past. By comparing them with the cultural practices we observe today, we gain insights into the preservation or transformation of our cultural heritage. The next question is, explain two factors that have contributed to changing demographics in our locality. The two factors that have contributed to the changing in the demographics is the population, right? So the population is increasing. Now what happens with the increasing population? When the population is increasing and the age distribution is increasing, or the migration pattern is affecting our change of society, then we have seen it brings a lot of changes in the demand for resources. For example, if we have now, if the bracket, the age span increases from 60 or 70 to 90, then we need what? We need medical services or health services. Now with health services, we are bringing in a lot of job opportunities. So we have to mention this, that changes in population, age distribution, migration patterns have influenced the locality. As population grows or declines, it brings in a lot of demand for resources. For example, an increase in the elderly population may lead to greater need for healthcare facilities and services and other specific needs. Mention all the points that are mentioned in the answer, right? Now let's come to the last question, that says, explain the social impact of changes in the society. Now when we talk of social impact, this has changed a great deal in the last few years. So changes in society, they influence our social relationship and cultural practices. For example, with urbanization and globalization, people of more diverse cultures, they come together and they enriched our culture by adding to new ideas, perspectives and traditions. This can actually lead to challenges in maintaining a sense of identity and cohesion as we navigate through different cultural influences. So changes in social norms and values can also occur, affecting how we interact with one another and how we perceive ourselves within a community. All this has to be mentioned when you mention the social impact of changes in a locality. So this is all about the changes which we have witnessed in this chapter. I hope you enjoyed learning. Happy learning.